All right. Hello and welcome to Unacademy. Good morning. My name is Aditi Bhatt, and I'm going to cover your daily newspaper analysis. That is the Hindu newspaper analysis, and we will be doing legal reasoning, current affair questions. All right. Uh, the news item. We will be analyzing the legal aspects of the general news items. Okay, and today is 2nd May, so let's begin. All right. So you can join my Telegram channel. This is the barcode that I've given here, and you can directly, scan the barcode and join the Telegram channel, or you can use the Telegram link, and then you can join the Telegram channel. The name of the channel is Aditi Bhatt Academy CLAT Legal CA. That is Current Affairs. All right. Now, today I have some very limited news items that I've covered today, because I have left out the insignificant ones. There were actually several, because when we go about looking at the legal aspect, you can actually identify a lot of things. But from your exam perspective, from the syllabus point of view, I have only total 16 news item. There are total 16 news items that I've actually focused upon. There were actually some repetitive news items with same similar issue. There are actually three or four news items with similar issue, similar topic. So I have only picked one of those. So like that. All right. So I hope that's clear. Okay. So what I do on the, let me just tell you something on Telegram channel daily. I send the PDF. I share the PDF copy of the Hindu newspaper. So in case you don't have, or you have not subscribed to the hard copy of the Hindu newspaper, you can actually get PDF copy. And during the class session, either you can study. So today I was slightly late in sharing the PDF version of the Hindu newspaper, but I will ensure that I'll share the newspaper at least 1 hour before the class. That is by 9 a.m. I will ensure that the newspaper reaches all of you, the PDF version, so that you can also read it, or you can refer to the news item while you are attending the class session. That is also another option. Okay. Acha, theek hai, let's move ahead. So this is the case. This is a news item on the front page of the Hindu newspapers, today's newspaper. Basically, the news item, it says Supreme Court. Sorry, please excuse me. Supreme Court says it can end wait for consensual divorce. Supreme Court says it can use its extraordinary power under Article 142 of the Constitution to grant divorce on ground of irretrievable breakdown of marriage if separation is inevitable and damage irreparable. So when you look at the article, basically it is talking about two things, and you can approach the articles from two different subject point of view. You can even approach it from family law subject point of view, and you can also approach the article from constitutional law subject point of view. Okay. फैमिली लॉ में अगर हम लोग ये देखें, फैमिली लॉ में कंसेंशुअल डिवोर्स सेक्शन 13B है हिंदू मैरिज एक्ट का, हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 का सेक्शन 13 कैपिटल बी है, विच टॉक्स अबाउट डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. ठीक है, उसमें बेसिकली इस बारे में बात की है कि कंसेंशुअल डिवोर्स यानी कि दो पार्टीज के कंसेंसस कंसेंट के ऊपर डिवोर्स मिले, एंड उसका ग्राउंड होना चाहिए इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज. मतलब अगर अगर अब साथ में अब नहीं रह सकते, और साथ में द बेसिकली द मैरिज, द रिलेशनशिप कैन नॉट हील फर्दर. बेसिकली अभी इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो गया मैरिज का, सेपरेशन इनएविटेबल है, चाहे आप 6 महीने रुकवा लो साथ में, या 1.5 साल, या जितना भी पीरियड रहता है, और डैमेज इरिपेरेबल अगर उन दोनों लोग के रिलेशनशिप या रिश्ते में. सो दैट इज basically irretrievable. That is called irretrievable breakdown of marriage. That is a ground for, that is a valid ground for consensual divorce. अब basically ये article क्या कह रहा है? This article is basically telling us about the
13B, सेक्शन 13B के जो प्रोविजन है वो किस बारे में बात करता है? इट बेसिकली स्टेट्स दैट अंडर सेक्शन 13B of the Hindu Marriage Act, it basically states that there is, I'll just tell you, wait. Generally what happens is that just a second. So generally what happens is that the husband and wife, both the parties who have approached the court, they are given, court उनको ये बोलता है कि आप तुरंत divorce, अगर उनका consensual divorce भी है, they have to basically follow the provision or the procedure laid down under section 13B of the Hindu Marriage Act or HMA, and उसके अंदर ये है कि they have to wait for 6 months or 1 year or 1.5 year depending on case to case basis. So basically एक particular time period में उनको साथ में रहना होगा, they'll have to try to build basically try to recover their relationship basically. What so कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई ऐसा केस है जहां पे इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो गया, यानी कि अब वो बियॉन्ड रिपेयर है, वो जो रिलेशनशिप है अब वो उसको जोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, इट इज बियॉन्ड रिपेयर, इट इज कंप्लीटली डैमेज, वो अगर आप 6 महीने के लिए उनको साथ में रख भी दोगे, साथ में रहने के लिए you'll forcibly make them stay for a particular time period, they will eventually separate. So separation is inevitable, damage is irreparable. In those cases the Supreme Court has the power, yani Supreme Court can exercise its power under Article 142 of the Constitution of India कि वो डायरेक्टली उनको डिवोर्स ग्रांट कर दे सुप्रीम कोर्ट विदाउट द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 6 months और 1.5 years. ओके, तो वो टाइम पीरियड वो वेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज उस टाइम पीरियड में कुछ बेनिफिशियल हो नहीं पाएगा, कुछ एडवांटेजेस, कुछ ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा. Now this also depends on case to case. The law को उन्होंने नकारा नहीं है. Supreme Court has not held the particular provision of the Hindu Marriage Act as invalid. So this is not them. They've not stated that 13B of the HMA is invalid. No. Basically, what they are saying is this is going to be followed as the law, but in exceptional cases, in cases where there is irretrievable breakdown of marriage and which is something that is beyond repair, wherever separation is inevitable, in those specific cases the divorce will be granted without following the stipulated time period thing, and the Supreme Court has the power to do this. Okay, so in this particular case, in this particular article, in fact, the Supreme Court has the Supreme Court's power under Article 142 of the Constitution has been discussed. Basically it says that article the Supreme Court has extraordinary discretion or extraordinary jurisdiction under Article 142 of the Constitution, and this can be used to deliver complete justice for couples trapped in bitter marriages by granting them divorce by mutual consent and sparing them the misery of waiting for 6 to 18 months for a local court to declare the annulment final. Okay, ठीक है, तो बेसिकली ये है. और आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट डज इट बेसिकली से? इट टॉक्स अबाउट एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज, ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी. इट गिव्स स्पेशल पावर्स. So the judgment does not mean people can rush straight to the Supreme Court for a quick divorce. It means that the Supreme Court, using great care and caution, can invoke Article 142 to deal with certain cases which come to it by way of transfer petitions or appeals in civil or criminal matrimonial disputes. ठीक है, I hope this was clear. तो इस आर्टिकल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है. हमें फैमिली लॉ से अगर हम इसको पर्सपेक्टिव से देखें, देन सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 which talks about divorce by mutual consent, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस इन दो इश्यूज के बारे में या इन दो प्रोविजंस के बारे में बात की गई है. ऑलराइट, ठीक है.
I hope it is clear. In case you have any doubt, uh, you can write your question or your doubt in the comment section below, and we will take all the comments or the questions in the last 5 to 10 minutes of the session. Okay, so don't worry, your comments and section and your all your questions and all your queries will be solved. Okay, अच्छा ठीक है, let's move on. अब ये एक आर्टिकल है. अच्छा, दिस इज आफ्टर बिहार, उड़ीसा begins survey of OBC castes. अच्छा, this article, there were actually 2-3 articles related to reservation, 2-3 news items related to reservation in the newspaper, in today's newspaper, but I picked this one. This was the first. I just went along with this thing. So this was in the starting itself and on the front page itself, so I just picked it up. So basically ये किस बारे में बात कर रहे हैं? सर्वे ऑफ OBC कास्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. अगर हम इस आर्टिकल को समझें, ये आर्टिकल हम किस पर्सपेक्टिव से अप्रोच कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें भी रिजर्वेशन का जो इशू है उससे हम लोग बेसिकली वी कैन अप्रोच दिस आर्टिकल फ्रॉम द रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू. And this article talks about OBC caste surveys in state. State basically has the power to determine their social and educational status. ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? बेसिकली व्हाट ऑल द स्टेट्स हैव दिस ड्यूटी, क्योंकि उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना होता है टू सर्टेन कम्युनिटीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आइडेंटिफाई कि उन हर स्टेट की डेमोग्राफी अलग होती है. ठीक है, तो पहले स्टेट का काम होता है वो अपने स्टेट की डेमोग्राफी को आइडेंटिफाई करना. कितने लोग नॉन रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, कितने लोग जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, कितने लोग शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं, कितने शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, कितने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. मतलब हर एक कैटेगरी को उनको पूरा सर्वे रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है. एवरी स्टेट हैज दिस ड्यूटी, वो एक एनुअल उनको बनाना रहता है. ठीक है, स्पेशली व्हेन दे आर गिविंग रिजर्वेशन, स्पेशली अगर वो लोग कोई लॉ ऐसा बना रहे हैं जो कि स्पेसिफिक कम्युनिटी को पर्टिकुलर रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है एजुकेशन या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो उनको एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है. ठीक है, और उस रिपोर्ट में बेसिकली दे हैव टू, उनके पास एक प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए विद ऑब्जेक्टिव एंड क्वांटिफाइबल डेटा, जो कि बैक कर सके उनके सब्सटैंटिव रिजर्वेशन प्रोविजंस को, सब्सटैंशियल बैकिंग प्रोवाइड कर सके वो डेटा. और बेसिकली दे हैव टू, वाया दैट रिपोर्ट दे हैव टू डिपिक्ट बैकवर्डनेस एंड इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, बेसिकली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. सो अगर कोई ऐसी कम्युनिटी है, कोई ऐसी बैकवर्ड कम्युनिटी है, या कोई ऐसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है, इन दिस केस बिकॉज दे आर रिफरिंग टू ओबीसी, दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस और अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज. सो कोई भी अगर ऐसी कम्युनिटी है which is not adequately represented, which is a backward community and not adequately represented in the public employment, स्टेट के जितने भी सर्विसेज हैं उनमें उनका अगर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो डेमोग्राफी है या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जितने लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके लिए वो प्रॉपर लाइक रिपोर्ट एक प्रिपेयर करके एंड डेटा, स्पेसिफिक क्वांटिफाइबल डेटा के साथ, एंड देन दे कैन ऑब्वियसली प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी टू अपलिफ्ट देम. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सो ये क्या है? बेसिकली दे फॉल अंडर फंडामेंटल राइट्स. तो जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, रिजर्वेशन इन एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू अदर बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल्स 15 clause 4 and 15 clause 5, and reservation in public employment is provided under article 16 clause 3, 16 clause 4, 16 clause 4a to OBCs. एंड अगर हम DPSPs की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो अंडर आर्टिकल 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में द स्पेशल प्रोटेक्शन हैज बीन प्रोवाइडेड. 1980 में एक मंडल कमीशन रिपोर्ट आई थी 1980 में, एंड उसमें ये बोला गया था कि 27% उस टाइम पे ये जो ओबीसीज का कॉन्सेप्ट है, यानी अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज का जो कॉन्सेप्ट है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था उस रिपोर्ट में, मंडल कमीशन रिपोर्ट में, और उसमें ये बोला गया था कि उनको 27% रिजर्वेशन
स्टेट्स में और सेंट्रल उसमें देनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बाद 1992 में एक इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट आया था, जिसमें कि ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में बात करी गई थी, और कॉन्सेप्ट जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है उसको भी आइडेंटिफाई किया गया था। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट बेसिकली वो है पीपल हु आर ऑलरेडी who belong to the backward community, but they are not backward anymore. They have they are represented in several state services or central services, तो वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, ठीक है। और फिर 2006 में ये केस आया था, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट केस। इट टॉक्ड अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड क्वांटिफाइबल डेटा, जो कि रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है स्टेट गवर्नमेंट्स को, टू सब्सटैंशिएट reservation provisions for specific communities if they are providing, and that report should be able to depict backwardness and inadequate representation in public employment, ठीक है। And this all everything has to be done with the compliance of article 335 of the constitution of India। तो article 335 मतलब ये constitution of India का ये एक article है जो कि ये ensure करता है कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर वो लोग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या पब्लिक सर्विसेज में, स्टेट और या सेंट्रल रिक्रूटमेंट में या सर्विसेज में, दे आर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, then they have to maintain efficiency. They cannot do away with efficiency. So this article 335 ensures that efficiency is being maintained in either state or central services और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बेसिकली, ठीक है। तो एफिशिएंसी हमेशा मेंटेन करनी जरूरी है फॉर रिजर्वेशन, ओके। तो अगर कुछ कट ऑफ क्राइटेरिया है, लेट्स से मार्क्स हैं और एक पर्टिकुलर सेट कट ऑफ क्राइटेरिया है, तो उस कट ऑफ क्राइटेरिया के ऊपर ही जो लोग उस कम्युनिटी के लोगों ने मार्क्स लाए हैं, देन ओनली दोज पीपल विल बी सिलेक्टेड, द अदर्स विल नॉट बी सिलेक्टेड इवन इफ द सीट्स गो वेकेंट, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। अच्छा, next news is in Karnataka, BJP promises uniform civil code if elected. Now, you don't need to get into the political aspect of the things, but you need to understand, first of all, this news is from constitutional law subject point of view. It is talking about uniform civil code, that is UCC. UCC कहाँ पे दिया है? It is given under Article 44 of the Constitution of India, which falls under part 4 of the Constitution of India, Directive Principles of State Policy. अच्छा, हमारे ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ओके, आर्टिकल 44 of the Constitution of India. When our forefathers basically drafted the constitution, when our constituent assembly members rather, when they drafted the constitution, they had originally put in the constitution or had originally drafted article 44 as part of the constitution, which talked about uniform civil code, and with the intention कि ये future में uniform civil code implement हो जाएगा. For students who do not know what uniform civil code is, uniform civil code basically क्या बात करता है, हमारे पास एक होता है सिविल कोड, एक होता है क्रिमिनल कोड, ठीक है। वी हैव अ यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड, ठीक है। हम लोग ये नहीं बोलते कि हिंदूज का क्रिमिनल कोड अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है, पारसीज का अलग है। वी डोंट फॉलो सेपरेट क्रिमिनल कोड, वी हैव वन यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड। क्रिमिनल लॉ एक ही है सबके लिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। बट सिविल कोड में क्या चीजें आ जाती हैं? मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि जिसको डिवोर्स भी कहते हैं, डिवोर्स और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, सक्सेशन, ठीक है। ये सारी चीजें, गार्जियनशिप, तो ये सारी चीजें बेसिकली सक्सेशन में भी विल यानी टेस्टामेंट्री सक्सेशन, इंटरस्टेट सक्सेशन, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज, जो भी ये सारे मैटर्स हैं, ये सारे जो इश्यूज हैं, ये सिविल कोड में आते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे हिंदूज का अलग है, हिंदूज के अलग लॉज है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट, ओके, हिंदू guardianship act. So there are basically separate laws for Hindus, there are separate laws for Muslims, there are separate laws for Christians, separate for Parsis,
ठीक है. सो एंड देयर इज ऑल्सो अ स्पेशल मैरिज एक्ट विच इज being debated currently in the Supreme Court. So we also have a special marriage act, but since क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ पाया स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 में, इसीलिए गवर्नमेंट नेहरू गवर्नमेंट टेक के आई थी. बट ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट इट, बेसिकली लॉट ऑफ फैक्टर्स हैव बीन देयर जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो पाया है. तो सो द गवर्नमेंट्स कीप ऑन प्रॉमिसिंग, लेट्स सी इन फ्यूचर. ऑल राइट, सो यूनिफॉर्म, दिस इज व्हाट यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन. यूनिफॉर्म सिविल कोड ये होगा कि अभी जैसे अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग रिलीजन, हर रिलीजन के अलग सिविल कोड्स हैं, तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो एक कॉमन लॉ हो जाएगा, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, डिवोर्स से रिलेटेड हो, यानी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, सक्सेशन, ये सारे जितने इश्यूज हैं वो एक ही कोड, एक ही लॉ से डिटर्मिन होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर रिलीजन अ पर्सन बिलोंग्स टू. ओके, आई होप दैट इज क्लियर. ठीक है. अच्छा, अब ये एक आर्टिकल है. बेसिकली दिस आर्टिकल इज पुलिस स्टॉप्स AR रहमान पुणे कॉन्सर्ट साइटिंग डेडलाइन. ठीक है, रात के 10 बज चुके थे और उसके बाद भी कॉन्सर्ट चल रहा था. ऑफ कोर्स लोगों ने कंप्लेंट करी होगी, एंड दिस बेसिकली मैंने ये आइटम, ऑल्दो इट्स नॉट दैट रेलिवेंट फ्रॉम करंट लीगल न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसको कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी है, बिकॉज ये टॉर्ट को रिफ्लेक्ट करता है. दिस इज अ टॉर्ट, पब्लिक न्यूसेंस. Okay, there is a saying which basically talks about your right ends where my nose begins. ठीक है, आप इमेजिन करो कि कोई इंसान है जो कि अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है, अपने राइट को एंजॉय कर रहा है. वो पार्क में टहल रहा है, पार्क में वॉक कर रहा है, एंड ही हैज अ स्टिक इन हिज हैंड, एंड ही इज फ्रीली टेकिंग दिस दैट स्टिक और घुमा रहा है, इधर से उधर घुमा रहा है. बट सडनली सामने एक कोई इंसान खड़ा हुआ है एंड उसको वो स्टिक लग जाती है. ठीक है, तो उसमें क्या है कि जिस पर्सन को वो स्टिक लगी है, जिससे उसको चोट लगी है, जिस पर्सन को, वो उस पर्सन के खिलाफ एक टॉर्शियस केस फाइल कर सकता है, बिकॉज आप अपने राइट को एंजॉय कर सकते हो जब तक किसी और का राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा. as long as you're not violating any other person's right to enjoy his freedom, his property, unless and until you're not doing that, you can freely enjoy your right. ठीक है, your right ends where my nose begins. ये बहुत ही पुराना एक ठीक है, एक saying है, saying. Okay, and every right also comes a duty. ठीक है, तो right है, आपका खुद का right है, you have a right to enjoy your freedom, but you also have a duty to ensure that you're not violating any other person's rights. So this is a person's duty. ठीक है, so I hope this is understood. So this is from a conceptual point of view, I thought I could share it with you. ठीक है, I hope that's clear. All right. ठीक है, so now this is the next news item which says acts of missionaries to spread Christianity not illegal. This is Tamil Nadu government to Supreme Court. ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया दैट बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू क्रिश्चियन मिशनरीज, that they are spreading Christianity and whether it's legal or not. So that was the case. Okay. अच्छा, हम अब इस पे बात करते हैं. ये आर्टिकल, ये जो न्यूज आइटम है, दिस इज कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर्सपेक्टिव, बिकॉज दिस इज टॉकिंग अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इशू. वो इशू क्या है? दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन को समझना पड़ेगा. आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया talks which is a fundamental right. Remember, part 3 of the constitution में आता है, it falls under part 3 of the constitution and it is a fundamental right. ठीक है, freedom of religion is a fundamental right. Okay, now वो 4 चीजों की बात करते हैं. 4 things come under freedom of religion. Okay, 4 freedoms rather. First is freedom of conscience, यानी कि आप कोई भी बिलीफ रख सकते हो. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंसान को, इंडिया के हर एक नागरिक को ये फ्रीडम देता है
फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, यानी कि आप बिलीव कर सकते हो किसी भगवान में, आप नहीं भी बिलीव कर सकते हो, यू कैन इवन रिमेन एन एथिस्ट, और यू कैन बिलीव इन सर्टन गॉड, you can believe in all sorts of things basically. Freedom of conscience is you can even develop your own new belief system. ठीक है, so there is no limit, there is no restriction कि आपको इसी पर्टिकुलर तरीके से बिलीव करना है, या नॉन बिलीवर्स उसमें कवर्ड नहीं है, नहीं, everyone is covered, be it a believer, non believer, ठीक है, spiritual seeker, everyone basically. ठीक है, so freedom of conscience, our constitution provides us freedom of conscience. Okay, that is one. uh, then freedom freedom of conscience basically means freedom to believe or not believe. Freedom to profess, second is freedom to profess religion. ठीक है, आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो. ठीक है, थर्ड इज फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन, यू कैन प्रैक्टिस योर रिलीजन, यू आर फ्री टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन. देन द फोर्थ इज फ्रीडम टू प्रोपोगेट रिलीजन, आप अपने रिलीजन को प्रमोट या प्रोपोगेट कर सकते हो, दैट इज द फोर्थ दिस थिंग. सब्जेक्ट टू, अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. कई बार एग्जाम में ये चीज पूछ लेते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है, इनफैक्ट कई बार क्वेश्चन पेपर में डिसेंसी भी ऐसा लिखा होता है. सो डिसेंसी इज नॉट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. फ्रीडम ऑफ रिलीजन के जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, दैट इज पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. फ्रीडम ऑफ रिलीजन does not include the right to convert an individual through fraud, deception, coercion, allurement or any other such means. ठीक है, अगर कोई इंसान वॉलंटरीली अपनी इच्छा से किसी रिलीजन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में जा रहा है, ठीक है, या एक नॉन बिलीवर है और वो किसी रिलीजन में वो बिलीवर में कन्वर्ट हो, बेसिकली एनी रिलीजन, तो वो वॉलंटरी, कंप्लीटली वॉलंटरी होना चाहिए. वो फ्रॉड के थ्रू होना, ये नहीं होना चाहिए कि उसको कुछ बताया रिलीजन के बारे में और रिलीजन मतलब कुछ और निकला. फ्रॉड नहीं होना चाहिए, उसके साथ डिसेप्शन नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए, उसके साथ फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होना चाहिए कि आपने गन पॉइंट पे किसी को कन्वर्ट करा लिया. ठीक है, उसके साथ अल्योरमेंट नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट अल्योरमेंट आई बिलीव इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन. तो पुराने टाइम में शायद हुए करते थे, अभी भी होता होगा, आई एम नॉट श्योर, बट अल्योरमेंट इज अ वेरी, इट हैज quite been in news also, and many people have also been convicted because of that. allurement की लोगों की गरीबी का या लोगों की वल्नरेबल सिचुएशंस का फायदा उठा के जो कन्वर्जन्स होते हैं, यानी कि किसी को कोई फाइनेंशियल सिचुएशन में फंसा हुआ है, किसी के मेडिकल बिल्स हैं, किसी को प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, कुछ भी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, और उसको ये बोल के कि हम आपकी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे और आपको इतना इतना पैसा देंगे, इतना इतना ये कर देंगे, फ्लैट दिला देंगे, ये सब चीजें, एंड बट यू कन्वर्ट टू दिस रिलीजन, सो कॉल्ड रिलीजन. सो दैट इज अल्योरमेंट. ओके, तो ये इन सब तरीकों से, या और भी कोई भी अगर ऐसे इलीगल तरीकों से, या ऐसे जो नॉन कंसेंशुअल तरीके हैं, या जो भी गलत तरीके हैं, उनसे नहीं कन्वर्जन होना चाहिए. राइट टू कन्वर्ट समवन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. ये जो चार चीजें हमने बात करी फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, जो चार चीजें आती, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, प्रैक्टिस, प्रोपेगेट, ये चारों फंडामेंटल राइट का पार्ट है. बट राइट टू और फ्रीडम टू कन्वर्ट समवन या राइट टू कन्वर्ट समवन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, तो कन्वर्जन वॉलंटरी होना चाहिए. कन्वर्जन अगर इन सब मीन्स के थ्रू हुआ है, देन ऑफ कोर्स दैट्स इलीगल. ओके, एंड इट्स नॉट वैलिड एट ऑल. Okay, let's move ahead. Then this is PIL seeks bill against screening for nursery admissions passed. अच्छा, now this particular ये जो न्यूज आइटम है, ये बात कर रहा है कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया था. जो नर्सरी में एडमिशन होते हैं, स्कूलों में, जो स्कूल्स में नर्सरी के क्लास पे जो एडमिशन होते हैं, उनमें स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जा रहा था, इंटरव्यू, स्क्रीनिंग टेस्ट. तो ये कई जगह, बिकॉज उस लेवल पे आप कैसे
जज कर पाओ या whatever is the reason. बट ये सारी चीजें, whether it is valid to conduct screening test at that level, पेरेंट्स का, बच्चों का, whether it is valid or not, तो उसके खिलाफ पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में जारी करी गई थी. एंड द सुप्रीम कोर्ट, sorry, not the supreme court but Delhi High Court, and the Delhi High Court has basically stated that this is not valid at all, कि आप नर्सरी लेवल पे स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, दैट्स नॉट वैलिड अंडर आरटीई, दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट. तो इस पर्टिकुलर अगर हम लोग आर्टिकल को अप्रोच करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी. एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? इट रेफर्स टू लिटिगेशन अंडरटेकन टू सिक्योर पब्लिक इंटरेस्ट and demonstrates the availability of justice to socially disadvantaged parties, and was introduced by Justice P.N. Bhagwati and Justice V.R. Krishna Iyer. It is a relaxation on the traditional rule of locus standi. ठीक है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने locus standi की बात करी थी. ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बेसिकली कोई भी सोसाइटी में हमारे आसपास कोई भी ऐसा कुछ इशू चल रहा है जिससे कि नॉर्मल पब्लिक परेशान हो रही है, and it is significantly affecting the public at large. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर इशू को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में डायरेक्टली एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज बेसिकली अ टूल. ठीक है, तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, जरूरी नहीं है कि उसको लॉयर हो, ऐसा जरूरी नहीं है. नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया अपना पहले रिसर्च कंडक्ट कर ले कि क्या है इशू, पूरा लोगों से सर्वे कर ले, या लोगों से पूरा अच्छा एक प्रॉपर रिसर्च करके वैलिड उसके पास डेटा होना चाहिए, एंड देन ऑफ कोर्स दैट पर्सन कैन गो टू डायरेक्टली टू द कोर्ट, और उसको उसको एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको वी कैन डायरेक्टली फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. उसको वो अगर पर्सनली अफेक्ट नहीं भी हो रहा है उस चीज से, देन ऑल्सो जो ट्रेडिशनल लोकस स्टैंडर्ड के रूल्स हैं उनको रिलैक्स कर दिया जाता है. ठीक है, तो ये नहीं पूछ सकते कि अच्छा आपके बच्चों का अभी स्क्रीनिंग हुई क्या नर्सरी लेवल पे, नहीं. अगर उसके कोई बच्चे नहीं भी है, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट इफ दैट पर्सन इज नॉट personally affected also by this issue, then also that person, considering the public at large, can file the PIL, because the locus standi rules which apply in general cases do not apply when it comes to public interest litigation. I hope that is clear. अच्छा, अब हम बात करते हैं एजुकेशन की. तो एक तो हो गया पीआईएल जो कि एक टूल है. ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव से ये न्यूज आइटम. दूसरे पर्सपेक्टिव है एजुकेशन. ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो कि हमारा एक अभी फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन. तो उसके बेसिस पे, तो पहले क्या था ना, इनिशियली राइट टू एजुकेशन वॉज नॉट अ फंडामेंटल राइट. जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, एट दैट टाइम राइट टू एजुकेशन वॉज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट वॉज पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 41 भी एजुकेशन की बात करता है, और आर्टिकल 45 भी एजुकेशन की बात करता है. तो ये दो आर्टिकल जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं, दे टॉक अबाउट एजुकेशन, एंड दे स्टेट दैट कि स्टेट हैज द ड्यूटी कि कोई भी अगर स्टेट लॉ बना रहा है तो बच्चों की पढ़ाई को कंसिडरेशन में रख के ही वो लॉ बनाए. ठीक है, this was the article, these were the provisions in the constitution at that time. 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया. ठीक है, ड्यूरिंग द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, एंड उस टाइम पे राइट टू एजुकेशन was made a fundamental right, and it was inserted in the Constitution of India under Article 21A of the Constitution, and एक fundamental duty भी insert करी गई in the Constitution under Article 51A K, 51A subclause K. ठीक है, अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज जो बाकी सारी हैं 51A से लेके 51AJ तक, ये सारी इंसर्ट करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. ठीक है, बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. ठीक है, बट जो सब क्लॉज के था फंडामेंटल ड्यूटी का 51A के, that was inserted by the 86th constitutional amendment,
एक्ट ऑफ 2002, ठीक है, एंड आर्टिकल 21A के साथ इसको भी डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड दिस बेसिकली talks about education of students from 6 years of age to 14 years of age, ठीक है। और एक 2009 में फिर इसके ऊपर फिर एक लॉ बनाया गया, एक यूनियन लॉ बनाया गया, that is Right to Education Act or the Right of Children to Free and Compulsory Education Act of 2009. This is RTE, okay। स्टेट, बिकॉज एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का एक सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। हम लोगों ने 7th शेड्यूल पढ़ा था। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, सॉरी द यूनियन लिस्ट विच इज लिस्ट 1, द लिस्ट 2 इज द स्टेट लिस्ट, एंड लिस्ट 3 इज द कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है, लिस्ट 3, उसमें जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स या जितने भी एंट्रीज हैं उस पर यूनियन और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं, राइट। सो उसमें एजुकेशन इज वन ऑफ द एंट्रीज अंडर द कंकरेंट लिस्ट, एंड उसमें यू विल सी, जो ये तो है आरटीई एक्ट ऑफ 2009, दिस इज अ यूनियन लॉ, दिस इज अ सेंट्रल लॉ, बट इन स्टेट्स आल्सो यू विल सी सेवरल स्टेट लॉज फॉर एजुकेशन, and they have their own rules as well education से related, so ठीक है। सो आरटीई दे हैव टू फॉलो। सो आरटीई के अंडर बेसिकली प्रोविजंस ये हैं कि 25% रिजर्वेशन प्रोवाइड करना होता है हर एक स्कूल को, वेदर इट इज अ पब्लिक स्कूल और अ प्राइवेट स्कूल, दे हैव टू प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ 25% to vulnerable sections of the society, or the students who are belonging to vulnerable sections of the society, like if they are belong to SC, ST community, OBC, so on and so forth, they are economically weaker section now, of course, so they have to provide reservation, and उसका जो भी funding होती है that state government basically वो अपने budget से, state government, central government, so basically they fund, central government basically central जो schools होते हैं उनमें funding करती है, and the state government states जो schools होते हैं उनमें funding करते हैं, okay, ठीक है। Now moving ahead, I hope this is clear. If you have any questions, write in the comment section and we'll take it up. अच्छा, next is the importance of constitutional punctuality. Do give it a read. This article was very interesting. ठीक है। अच्छा, now this is, of course, it is a constitutional law issue. Constitutional, it's talking about constitutional punctuality. ठीक है। Now this article talks about governors. तो हमने गवर्नर की we have stated appointment of governors, powers and duties of governors. Please go and revise these topics की governors को कौन appoint करता है, how they are appointed, what are the powers and duties of a governor, ठीक है। Now सुप्रीम कोर्ट इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि गवर्नर्स शुड नॉट सिट ओवर बिल्स indefinitely, ठीक है। there is an idea of constitutional punctuality, that is all constitutional high offices including those of the President of India and speakers of assemblies must suo motu evolve guidelines to discharge duties in a time bound manner. इसका मतलब कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई लॉ पास कर रही है, ठीक है, लॉ बेसिकली लॉ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने डिस्कशन कर लिया, उसको मेजॉरिटी वोटिंग मिल गई उस पर्टिकुलर लॉ को, फिर वो लॉ जाता है गवर्नमेंट के पास, सॉरी गवर्नर के पास उनके असेंट के लिए, ठीक है। तो गवर्नर के पास 3 ऑप्शंस होते हैं अंडर आर्टिकल 200 of the Constitution of India. The governor has 3 options basically. He can either give assent to the bill sent by the state legislature, ठीक है, assent दे दिया, अब state legislature से आया, either unicameral state legislature or bicameral state legislature. Remember, parliament is completely bicameral. Parliament में there are 2 houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, that is the lower house and the upper house, or the house of the people and the council of states, ये 2 houses हैं, so bicameral legislature in parliament. But in states it is optional. Certain states have bicameral legislature and certain states have unicameral legislature, ठीक है। So in states depending on whatever the legislature is, whether it's bicameral, unicameral, the state legislature they basically discuss amongst themselves, the members discuss the particular law that has been put forth. वो लॉ डिस्कस करने के बाद उसको ऑब्वियसली वोटिंग मिलती है, पहले तो मेजॉरिटी अगर वोटिंग मिलती है देन ऑफ कोर्स स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूव हो जाता है, बट देन दैट लॉ गोज टू द गवर्नर,
Governor has to either give assent, or governor can withhold his assent, which is also sometimes referred to as pocket veto, or can reserve a bill for the consideration of the president. ठीक है, तो विदहोल्ड असेंट को दो तरीके से समझा जाता है, कई बार दो तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जाता है। एक तो जो विदहोल्ड असेंट का मतलब है कि प्रेसिडेंट ने आइडियली इस आर्टिकल में यही चीज डिबेट हुई है, यही चीज एक्चुअली जो विदहोल्ड असेंट यानी पॉकेट वीटो है उसी के ऊपर चर्चा की गई है कि इसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि गवर्नर के पास वो बिल आएगा पर्टिकुलर, एंड देन बिल को वो रखे रहेगा और उस पर कुछ भी कुछ भी डिसीजन नहीं देगा। दैट वुड बी मतलब ही इज जस्ट सिटिंग ऑन द बिल indefinitely for an indefinite period of time, ठीक है, unless of course he is removed, ठीक है। सो तो ये एक हो सकता है उसका मीनिंग। सेकंड इज दैट the governor withholds his assent in the sense that he sends the bill back to the state legislature stating that they need to reconsider the bill, ठीक है, reconsider the bill, and then of course the bill is sent back after reconsideration or no reconsideration to the governor। तो वो भी एक मीनिंग हो सकता है withholding assent का, ठीक है। So there can be two meanings for that, so which should be followed। अच्छा, so सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बोला है कि जो लेजिस्लेचर की सॉवरेनिटी है, बिकॉज इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, इंडिया इज नॉट अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो मेन क्रक्स होता है वो क्या होता है, दैट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है, एंड लेजिस्लेचर की सॉवरेनिटी मेंटेन करना, सिंस वी आर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड द कॉन्सेप्ट इज समथिंग दैट वी हैव बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो लेजिस्लेचर की सॉवरेनिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, कैन नॉट since governor is part of the basically governor is part of president हो गया या governor हो गया, they both are actually part of the state, sorry, they are part of the executive also, they are part of the legislature also, and they are part of the judiciary also to a certain extent, ठीक है। तो ये हो गया, so they so in order to maintain the sovereignty of legislature and the parliamentary democracy, in order to safeguard the parliamentary democracy, ये चीज जरूरी होगी कि जो टाइम बाउंड मैनर से जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं, दे शुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज इन अ टाइम बाउंड मैनर, और अगर नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो एक गाइडलाइंस इशू करें, कि गाइडलाइंस इशू करें कि जो भी ड्यूटीज हैं उनको टाइम बाउंड मैनर में डिस्चार्ज किए जाए, ठीक है। सो आई होप दैट्स क्लियर। So Article 200 of the Constitution of India limits the options before the governor to give assent to the bill sent by the state legislature, or withhold assent, that is pocket veto, or reserve a bill for the consideration of the president. So there are certain, there's this case law Shamsher Singh versus State of Punjab 1974 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें ये बोला गया है कि the discretion of the governor is extremely limited, and even in such rare cases shall act in a manner that is not detrimental to the interest of the state. So the governor cannot really act in a manner कि वो state के लिए detrimental हो जाए, कि वो बैठा हुआ है और अगर कोई ऐसा law है जो कि स्टेट को बेनिफिट करेगा, यानी बहुत जरूरी एक लॉ पास होना वो जरूरी है बिकॉज देयर इज सर्टेन इशू, तो गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है, डेट्रीमेंटल ऐसा कुछ इस तरीके से एक्ट नहीं कर सकता है कि वो स्टेट के इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल हो जाए। गवर्नर शैल एक्ट ओनली on the aid and advice of the state council of ministers, ठीक है, स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नाउ दिस आर्टिकल बेसिकली इज टॉकिंग, अच्छा दूसरी बात भी कर रहा है कि कई बार ये सिर्फ गवर्नर पे लागू नहीं होता है, ये कई बार जो लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर्स होते हैं उनके ऊपर भी लागू होता है, बिकॉज क्या होता है, जो एंटी डिफेक्शन लॉज होते हैं, ठीक है, एंटी डिफेक्शन के जो मैटर्स आते हैं वो उनके ऊपर डिसाइड कौन करता है, डिसाइडिंग अथॉरिटी स्पीकर होता है, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। स्पीकर के पास डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है कि किसी पर्सन को, whether that person is holding his membership of the assembly or not based on the grounds of defection law, ठीक है।
So the Speaker of Legislative Assemblies sometimes act as quasi-judicial tribunals under the 10th Schedule Law or the Anti-Defection Law, 10th, which comes under 10th Schedule of the Constitution of India. So Article 191 and 192 of Constitution of India, the practice of legislatures. So what basically is anti-defection law? It is the practice of legislators from changing political parties during their term continues unabated in Indian legislatures despite the 10th schedule. And मतलब एक anti-defection law इसलिए introduce किया गया because there have been instances previously जिसमें कि you know एक पर्सन जो कि सुबह एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था, ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का, दोपहर होते बी का हो गया, फिर शाम होते ही सी पॉलिटिकल पार्टी का हो गया. सो एक फ्रेज एक्चुअली बहुत प्रचलित हुआ था बहुत टाइम पहले, आया राम गया राम. उस टाइम पे ये हुआ था कि बहुत सारे लोग ये चीज करते थे, बहुत सारे मिनिस्टर्स ये काम करते थे, एमएलए जो होते थे कि वो लोग पॉलिटिकल पार्टी से बहुत जल्दी जल्दी स्विच करते थे. ठीक है. सो ये दैट वाज नॉट हेल्ड conducive for maintaining a good political atmosphere of the country. That's why anti-defection law was introduced by the 52nd constitutional law amendment act. 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अमेंडमेंट आई थी जो 1985 में, जो अमेंडमेंट आया था उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया, विच इज द एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. इट वॉज मेंट टू अरेस्ट द प्रैक्टिस ऑफ लेजिस्लेचर्स फ्रॉम चेंजिंग पोलिटिकल अफिलिएशंस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. तो बेसिकली ये आर्टिकल ओवरऑल ये बोल रहा है कि कोई भी आप ऑफिस होल्ड कर रहे हो, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल हाई ऑफिस, you have a duty to you have a duty to act in a time bound manner to discharge your specific duties basically. And if you are not able to do that, at least issue a guidelines or evolve certain suo motu guidelines जिससे कि time bound manner में उस guidelines को follow करके आप अपनी duties का निर्वाहन कर सकें. Okay, I hope that's clear. Okay, any questions please write in the comment section below. We'll be taking up in the end. Achha, now this is the next news item, which is smaller this thing. Ludhiana gas leak case. ठीक है. This news item can be approached from three different aspects: tort law, criminal law and environment law. इसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात की गई है. सो एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को समझ लेते हैं. एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज बेसिकली सो उससे पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को समझते हैं. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अ पार्टी और कंपनी इज नॉट लायबल एंड नीड नॉट पे कॉम्पनसेशन इफ अ हजार्डस सब्सटेंस escapes its premises by accident or by an act of God or force majeure among other circumstances. ठीक है. इसका एक केस है रायलेंस वर्सेस फ्लेचर. ओके. उसके अगेंस्ट में एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो इशू है वो ये है कि उसमें कोई भी छूट नहीं मिलती है. बेसिकली अंडर एब्सोल्यूट लायबिलिटी अ पार्टी और अ कंपनी इन अ हजार्डस इंडस्ट्री कैन नॉट claim any exemption. It has to mandatorily pay compensation whether or not the disaster was caused by its negligence. ठीक है. सो कुछ बहुत फेमस केसेस हैं, स्पेशली दो बहुत फेमस केसेस हैं अंडर एब्सोल्यूट लायबिलिटी. इंडिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी को ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है in order to save people or provide them protection under the law, under Indian Constitution, that is Article 21 of the Indian Constitution, right to life and personal liberty. उसके अंदर बहुत, because Article 21 को अगर हम लोग interpret करें तो ये it has quite wide interpretation. So under MC Mehta versus Union of India, which is the 1987 oleum gas leak case, अंडर दिस केस एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया था. एंड देन यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विच इज ऑल्सो नोन एज द भोपाल गैस ट्रेजेडी केस 1989 का. सो ये भी एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जजमेंट है. ठीक है. Okay, now this is now coming to next article. These are not really news items, but there are sort of letters written to the newspaper. Okay, so manual scavenging को लेके लोगों ने concern express किया. So let's read about it. We can approach it from constitutional law perspective.
Manual scavenging is basically defined as the removal of human excrement from public streets and dry latrines, cleaning septic tanks, gutters, and sewers. Although the practice of manual scavenging is banned under the Prohibition of Employment of Manual Scavengers Act 2013, the inhumane exercise still continues. That's the bad situation actually. The act prohibits the employment of manual scavengers, the manual cleaning of sewers and septic tanks without protective equipment, and the construction of insanitary latrines. So manual scavenger एक बहुत ही it's a social issue. It's a very important this thing from not just constitutional law perspective, अगर हम इसको labor law perspective से लें, या even for that matter environment law perspective से भी, basically you can view this issue from different angle, but the main thing is कि ये जो practice है ये अभी भी कई कई जगह हो रही है. although the good thing is कि अब बहुत सारी चीजें जैसे पहले के टाइम में होता था, जो भी मैनुअल स्कैवेंजिंग होती थी और जो लोग नीचे सीवर में जाते थे, सेप्टिक टैंक्स में जाते थे, उनको क्लीन करने, उनको प्रोटेक्टिव गेयर्स प्रोवाइड नहीं किए जाते थे, यानी कि मास्क, स्पेसिफिक मास्क या गैस सिलेंडर्स या जो भी आइटम्स हैं, ग्लव्स या पूरी प्रॉपर एक जो इक्विपमेंट है या उनका गेयर्स हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जाते थे. ऑफ कोर्स अब धीरे धीरे अब बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं. इनफैक्ट आईआईटी मद्रास ने अभी रिसेंटली बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास ने, जिसमें कि अब वो लोग दे आर विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स दे आर यूजिंग टू लाइक दे आर डूइंग मैनुअल स्कैवेंजिंग इज बीइंग डन. तो कई सारे जो म्यूनिसिपल बोर्ड्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज आर व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर परचेजिंग, वो अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट में यूनिवर्सिटीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके दे आर एक्चुअली ब्रिंगिंग ऑन बोर्ड दीज टेक्नोलॉजीज, जिससे कि अब ह्यूमंस की जगह ये मैकेनिकली या मशीन्स के थ्रू ये सारी चीजें हो जाएंगी, इसमें ह्यूमंस की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज व्हाट द एंड गोल इज. ठीक है, कि ऐसी चीजों के लिए ह्यूमंस को ना करना पड़े और इसमें किसी की लाइफ को रिस्क नहीं हो, जिसमें कि और मशीन्स के द्वारा ये सारी चीजें हो जाए. ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा, नेक्स्ट point is next article is developing nations complaints deplored. This article basically is related to trade. It is a public international law article which basically deals with international organization. It talks about United Nations, United Nations Conference on Trade and Development, and WTO, which is the World Trade Organization. तो इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा में. ये आपको ये कुछ ऐसे स्टैटिक जीके के पॉइंट्स हैं which you should ideally remember. अच्छा, UN United Nations Conference on Trade and Development, which is UNCTAD, helps developing countries participate more equitably in the global economy. It also supports developing countries' efforts to use trade, investment, finance, and technology as vehicles for inclusive and sustainable development. Now, UNCTAD deals with trade policies, regulations, and institutions at national, regional, and international levels. And against that, WTO की जब हम बात करें, World Trade Organization is primarily, it governs global trade rules and adjudication, and the specific focus is to connect small and medium enterprises to global markets. Then India has been a WTO member since 1st January 1995 because WTO ने GATT को replace किया था. GATT was General Agreement on Trade and Tariffs. ठीक है. Now, इसमें basically, they have discussed the concepts of developing countries and underdeveloped countries. They are talking about first world nation, third world nations. So, you should go and refresh these concepts as well. Okay. Basically, what you need to understand from your exam point of view is their headquarters, international organizations कौन सी हैं, यूनाइटेड नेशंस के कितने ब्रांचेस, यूनाइटेड नेशंस के जो the six sub sections or the sub bodies of the United Nations, you need to understand those, and you need to understand the different other international organizations, उनके functions क्या हैं, you need to know their functions and their headquarters, and when did India become a signatory or a member. ठीक है, you need to know that, and like if it is a specific convention तो उसकी एक particular date, ठीक है, year, sorry, not date but the year of the convention. ठीक, okay, I hope that's clear.
Next, moving ahead, China's amended anti-espionage law. So China is basically has amended its anti-espionage law and made it more basically stringent. Okay, so although this article I added, it's not of a national perspective, but it is an international article. So you need to understand the different government structure of different countries. ठीक है, अगर आप पब्लिक लॉ को कंपेयर करोगे, व्हेन यू कंपेयर इंडियाज पब्लिक पॉलिसीज और इंडियाज way of governance, way of the Indian state with other countries, their structure, right? So that's sort of a comparative public law, and it also falls under public international law as well as slightly in constitutional law as well. So you need to understand, when you do a comparative study of different countries में जो उनकी governance structure है वो क्या है. So China basically is not a democracy. चाइना में सिटीजन्स के पास उतने राइट्स नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया. सो चाइना व्हेन यू डू अ कंपैरेटिव स्टडी विद ऑफ चाइना with countries like UK, US or India, you will see that the citizens don't have that much right. They don't have as many freedoms as our constitution basically provides us, the protection that our constitution gives, especially when it comes to freedom of speech and expression, freedom to practice their own religion. Right, in China of course Uyghur Muslims का जो बहुत सारा issue चल रहा है, that's also there. Constitutional right to remedy, ये सारे कुछ important freedoms हैं जो कि citizens को available नहीं है चाइना में. China is basically China lacks fundamental protection by state authorities to its citizens. So China is basically called PRC, which is People's Republic of China. It is a unitary socialist republic led by Chinese Communist Party. Remember, it is a unitary. So unitary hai. We are not a unitary. We are neither a unitary nor a federal. We are a quasi-federal. So India is quasi-federal. China is a unitary. Um, Unitary Socialist Republic led by Chinese Communist Party (CCP). It is a one-party Marxist Leninist. So one party system वहाँ पे follow होता है. इंडिया में क्या है? इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है. यूएस में क्या है? यूएस में टू पार्टी सिस्टम है. ठीक है. So it is a one-party Marxist Leninist surveillance state with authoritarian regime and dictatorship. दे प्रैक्टिस मार्केट कम्युनिज्म. तो चाइना में मार्केट कम्युनिज्म प्रैक्टिस होता है. इनिशियली चाइना वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. चाइना किसी के साथ इनिशियली ट्रेड नहीं करता था. चाइना वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी. चाइना ने कैपिटलिज्म नहीं. चाइना used to follow complete communist structure, completely social in nature, socialistic ideology. ठीक है, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रहा था. इंडिया ने कभी भी, इंडिया के प्रियम्बल में इनफैक्ट सोशलिस्ट टर्म है. इंडिया फॉलोज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. India follows a Gandhian socialism or a democratic socialism. India does not follow a Marxist socialistic ideology. In fact, India is a mixed economy. So India ने हमेशा from 1991 onwards, जब LPG हुआ, liberalization, privatization, globalization, from that of course capitalization को भी वो किया है further. And so India basically has always adopted a policy of mixed economy. India is not just completely a socialist or a capitalist country. India follows a mixed this thing. ठीक है. China of course now follows a market communism, because आप अकेले क्लोज्ड इकोनॉमी में आज के टाइम में नहीं रह सकते, बिकॉज वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है. यू हैव टू बी पार्टिसिपेटिव और एल्स यू मिस आउट ऑन फंड्स, right? On capital this thing. On China of course is one of the most leading when we talk about economically. All right. So China is one of the five permanent members of the UN Security Council. UNSC के it is one of the members, permanent members. उस पे भी काफी debate चल रहा है, because people are saying ये जो permanent members का concept है ये 1948 का concept है, and that it should be revised. It is a 1945 concept, and that it should be revised. And countries which are currently moving towards development, quite developed now, like India or South Korea, South Africa, such countries should be allowed to become
permanent members of United Nations Security Council. India, although, is a temporary member. For every 2 years, uh, basically हर 2 साल में elections होते हैं, and India is the temporary member of the United Nations Security Council, and currently India is heading the UNSC forum. ठीक है, for a 2 year this thing. And China is also founding member of several multilateral and regional organizations like Asian Infrastructure Investment Bank, Silk Road Fund, New Development Bank, Shanghai Cooperation Organization, जिसकी summit SCO की इंडिया में होने वाली है in I think October in Goa. ठीक है, so SCO, then RCEP. It is also a member of BRICS, G8+5, G20, APEC, East Asia Summit. China ranks poorly in measures of democracy, transparency, press freedom, religious freedom, and ethnic equality. The Chinese authorities are often criticized for human rights abuses. So I just want you to develop the analytical skill to compare. Basically आपको comparative एक वो आना चाहिए, हर कंट्री में क्या चल रहा है वो भी जानकारी होनी चाहिए, just to understand कि okay, just to do a comparative study on international perspective से, international law perspective से, and geopolitics के perspective से. Okay. Then government bans 14 apps in Jammu and Kashmir sites used by terror groups. ठीक है, so because there was a terror threat in Jammu and Kashmir, the government in the Ministry of Home Affairs has actually banned use of 14 apps in Jammu and Kashmir area. Now this can be viewed by from the constitutional law point of view, right? That is directly freedom of speech and expression. Article 19(1)(a) is being affected, but we need to also see that there are certain reasonable restrictions attached to Article 19(1)(a) under Article 19 clause 2. वो क्या क्या reasonable restrictions है? Sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, contempt of court, defamation, incitement to an offense. ठीक है, and in this case of course sovereignty and integrity, security of state, ये दोनों चीजें affect हो रही हैं, and to certain extent even public order is being affected, and that's why the government has actually banned the use of these apps. The landmark judgment on internet ban, which is one of the most recent judgments, is 2020 का एक judgment है, Anuradha Bhasin versus Union of India. So section 69A of Information Technology Act 2000 talks about power to issue directions for blocking for public access of any information through any computer resource. Section 5 of Indian Telegraph Act 1885 talks about power of government to take possession of licensed telegraphs and to order interception of messages. And then there's also temporary suspension of telecom services, public emergency or public safety rules to 2017. ठीक है, तो ये सारे whenever government bans a certain because अभी टेरर एक्टिविटी हुई थी कुछ टाइम पहले पूंछ में, जम्मू एंड कश्मीर में, सो दैट्स व्हाई just precautionary government has banned for a temporary period certain apps which were basically under surveillance. Okay, so these are the certain laws or provisions that have been cited. Okay, moving ahead. Consultations on sedition law are in final stage. Okay, so this of course sedition law की जब बात आती है, it comes under criminal law. Sedition under IPC, it's covered under section 124 capital A of IPC. It basically states whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India, shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added, or with fine. Basically अभी ये debate चल रहा है कि whether this law is constitutionally valid or not.
and whether the law should be removed or not basically. So अगर constitutional validity अगर ये हो जाता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है फाइनली, तो इट विल बी ऑटोमेटिकली टेकन आउट फ्रॉम द लॉ, ठीक है, फ्रॉम द आईपीसी. सो बेसिकली एक जो बहुत ही यहाँ पे ये जो प्रोविजन है, लेट मी जस्ट सी द, ओके, सो दिस प्रोविजन बेसिकली टॉक्स अबाउट, ये जो टर्म है ना, यहाँ पे टर्म जो दिया है, यूज किया है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ. दिस इज अ वेरी क्रिटिकल टर्म, क्योंकि गवर्नमेंट तो हर 5 साल में चेंज होती है, ठीक है. द if someone is basically inciting or attempting to excite disaffection towards, it should be nation or it should be, the country. अगर कंट्री के अगेंस्ट हो या नेशन के अगेंस्ट हो तब तो समझ में आता है, बट द टर्म गवर्नमेंट इज एक्चुअली समथिंग दैट इज स्लाइटली वेग. अब वो वेग क्यों है और उस चीज को आज तक रेक्टिफाई क्यों नहीं किया गया? बेसिकली ये जो लॉ है आईपीसी 1860 में बना था. This is a British made law. This is a colonial law that we are still following. Okay, so most of the many provisions have actually been repealed, okay, after the constitution, after India got its independence, but there were certain laws, one of which remains in the sedition. तो जिस जो कि हमेशा कंट्रोवर्सी का एक मुद्दा रहा है, बट इसके ऊपर आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक्टिवली इस पे एक्ट किया नहीं है, इसको अमेंड करने की कोशिश नहीं करी, या for whatever reason. So this has actually been quite in debate from, I mean, since independence rather. All right, moving ahead. This is the next, I think this is the final article that we are going to talk about, final news item. BSP MP Ansari disqualified from Lok Sabha after being convicted in murder case. Okay, so this is a constitutional law article. This also talks about disqualification of members of parliament and state legislature. Again, there were actually multiple articles related to disqualification of members of parliament. I picked this one. This was because it came under in the sequence, so I just okay. So under ये दो जगह बात की गई. In fact, when you read article 102 clause 1 of the Constitution of India, वो बात करता है that a person shall be disqualified for being chosen as or for being a member of either house of parliament if he is so disqualified. That is article 102, article 102 clause 1 subclause E states that if he is so disqualified by or under any law made by parliament, explanation, ठीक है, under any law made by parliament, there should be a full stop here, ठीक है. इतना इतना आपको समझना है. If he is so disqualified by or under any law made by parliament, ठीक है. अब दूसरे उस पे आते हैं. सेकंड इज सेक्शन 8 clause 3 of the Representation of Peoples Act 1951. clause 3 क्या बात करता है? A person convicted of any offense sentenced to imprisonment for not less than 2 years other than any offense referred to in subsection 1 shall be disqualified. अगर किसी पर्सन को किसी ऑफेंस के अंडर कन्विक्ट किया गया या इम्प्रिजनमेंट के लिए कन्विक्ट किया गया for 2 years, not less than 2 years, then he shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for the further period of 6 years since his release. ठीक है, ये इसी को देखते हुए BSP MP Ansari has been disqualified from Lok Sabha because Afzal Ansari, BSP MP from Ghazipur in Uttar Pradesh, lost his Lok Sabha seat on Monday after being convicted and sentenced in a case of kidnapping and murder. The Lok Sabha Secretariat issued a notification disqualifying him as an MP after he was convicted and sentenced by a special court, right, in the murder of MLA Krishnanand Rai, along with kidnapping and murder of Varanasi-based trader. So basically, he has been convicted and sentenced for several offences, and that's why he lost his membership of the state of Lok Sabha, right? And this also applies for state legislative assemblies. Okay, so we have actually completed the
We have actually completed the this thing. So we'll just, let me just go through the comments. Let me see if there are any comments, and I'll take up those questions, if any. Okay. Okay, I'll also pin the link in the comment. Yes. I'm also mentioning the Telegram section, the Telegram link in the comment section. So you can join the Telegram channel, right? Okay. Okay, so I see that there are no questions in the comment section. So we'll just wrap it up for today's class. Okay. This is the link if you want to join, and this is the barcode if you wish to scan it. Okay. So we'll meet then tomorrow again at 10 a.m. Okay. So, and I'll share the PDF of the Hindu newspaper tomorrow morning itself, so that you all can get some time. And I'll try and try and share the PDF as soon as possible, as soon as I get it, as soon as I get access to it. All right. Okay. So we'll meet tomorrow then. Okay. Thank you for attending the session. Thank you.